Hello. Chalo, we'll start in 2 minutes. Yeah, there is a workshop, very important workshop on 18th May. At 10 a.m. So I'll be taking at 10 a.m. and Mondal sir will take at 1:30. 1:30. आ गए सब लोग, बड़े लोग? आ गए सब लोग, बड़े लोग? Why are slides not changing? Why are slides not changing? Yes, सही है. अब सही आ गया. अब सही आ गया. सही आ गया. क्या हो रहा है? स्लाइड्स चेंज नहीं हो रहे हैं? क्या हो रहा है? स्लाइड्स चेंज नहीं हो रहे हैं? Are the slides changing? चेंज हो रहे हैं? पता नहीं चल रहा यार. 1 second please. Let me check. Slides are not changing. पता नहीं इसमें हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा है. पता नहीं. Let me check. चेक करते हैं. अभी सही है? Is it fine? Is it clear? Is it clear? Hello? Hello? आवाज आ रहा है सर? आवाज आ रहा है सर? ओके, फाइन ना? चलो. फाइन ना? आज आएगा मजा. हाँ. Yes. And 18th at 10 a.m.
देर इज अ वर्कशॉप, मतलब इट इज ऑन अन अकेडमी स्पेशल क्लासेस, ठीक है. देन इट विल बी एट 10 o'clock. माई सेशन इज एट 10 o'clock. एक सेकेंड. 10 o'clock. एंड मंडल सर विल टेक एट 1:30. 1:30, ठीक है. उसके बाद दीज आर सम ऑफ द डिटेल्स एयर ट्रैफिक अथॉरिटी का, ठीक है. And recently, 2 days back, I started basic thermodynamics, and Mundal sir started casting. These are the new batches, ठीक है. उसके बाद यस, अब हम स्टार्ट करेंगे रे बाबा. विल स्टार्ट. तो अब विल गेट बैक, ठीक है सर. सब लोग तैयार है? कुछ तो बोलो. चलो स्टार्ट करते हैं सर. ओके, रेडी? रेडी, एक बार बोलो सब लोग. सर आज बीएल का ऑफर लेटर आया 2 years के लिए. अच्छा, तो वेरी गुड. कौन है रे ये? आईक्यू टेस्ट बिना एग्जाम के ऑफर लेटर आया आपको? वाह, तू ही ग्रेट है रे. चलो चलो चलो, विल स्टार्ट सर. पेन कहाँ है? बहुत बढ़िया रे. वी आर स्टार्टिंग. एक्सपेक्टेड कट ऑफ मुझे आइडिया नहीं है सर. लाइक एक्चुअली मुझे ना पेपर ही पता नहीं है, बिकॉज समवन सेड कि दे विल शेयर पेपर. अभी तक मुझे पेपर नहीं मिला. आई हैव नॉट रिसीव्ड पेपर. ओके, अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूं सर. आई एम स्टार्टिंग. चलिए देखो, फटाफट आंसर दीजिए. नो कैलकुलेटर्स. तो लेट मी टेल यू क्या एक्चुअली मैं क्या प्लान कर रहा हूं सर. इन बीईएल फर्स्ट मॉक टेस्ट, it was pure theory. Not even a single numerical was there. In second, I gave some numericals. Now this is third. So why I gave some numericals? There is a reason. अगर बीईएल में तो मेरे हिसाब से तो न्यूमेरिकल बेस नहीं आएगा. सपोज if it is numerical based, then you should not be in problem. That's why I introduced some numericals. But इसमें it will be the best. I'm telling you. You will be seeing. Shall we start? Comment करो रे. अच्छा, जूनियर इंजीनियर का आया. वेरी गुड. स्टार्ट करें? बोलो. Shall we start? Yes, very good. Which are, so एक minute. You have taken questions from all subjects. ठीक है, चलो. Which one of the following metal forming processes is used for manufacture of steel wires? We are starting with a simple question. एक सेकंड प्लीज. अभी कनेक्ट हुआ? अब सही है. नाउ इज इट फाइन? एक बार कमेंट करो प्यारे. एक बार कमेंट करो, इज इट फाइन? ओके ना, अब नहीं होगा. नेटवर्क चेंज किया हम. चलो ये वाला लीजिए. वेल्डिंग ऑफ एल्यूमिनियम इज नॉर्मली डिफिकल्ट ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस. बताइए सर. व्हाई वेल्डिंग ऑफ एल्यूमिनियम इज वेरी डिफिकल्ट? बताइए सर. एग्जैक्टली, एग्जैक्टली.
the oxide film will prevent the welding of aluminum. Because under the influence of oxygen, atmospheric air, aluminum will form aluminum oxide, and you know its melting point is very high and it will not allow. ये बहुत important है sir, because of the formation of oxide film. B is the right answer. बहुत बढ़िया. Next, which one of the following refers to miter gears? Anyone? Miter gears. Bolo, golu, bolo. Miter gears. Actually, miter gears are used for getting 1:1 velocity ratio, and it is used for connecting two shafts which are at 90 degree. 90 degree. And bevel gears are used. Bevel gear 90 degree equal size. बोलो एक बार. Bevel gears 90 degree equal size. Same velocity ratio. बोलो एक बार. So right angle bevel gears having same number of teeth. बिल्कुल सही है रे बाबा. Okay, चलिए. ये बोलो. चलो चलो चलो. Next. Come on, come on. Next वाला. Come on, come on. Which one of the following is true for torsional shear stress at the axis of the shaft? You know, this is the axis of the shaft. T by J is equal to tau by R. He is asking torsional shear stress. It is TR by J. And you know, this is R. How is, mere pyare dosto, how is the shear stress varying with the radius? It is the center, linear. So it is something like this. So when R is 0, tau is 0. Yes. So it is like this. This is the torsional shear stress. This is maximum at the periphery and 0 at the center. That's why we use hollow shafts. So at the axis, what is the torsional shear stress? It is 0. Is it okay, my dear students? अरे कुछ तो बोलो रे. हे भगवान, क्या हो रहा है बच्चों को? आजकल बच्चे इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे. दुकान बंद करूं मैं? Shall I close the दुकान? बोलो. रोशन, तू इंटेलिजेंट है रे. Next. Which one of the following is the correct expression for hoop stress if P is internal pressure in a thin walled shell? The circumferential or hoop stress is given by PD by 2T and the longitudinal stress is given by PD by 4T. He is asking circumferential stress कितना होगा सर? PD by 2T होगा. He is asking hoop stress. So hoop stress is PD by 2T. Is it okay? अरे यार आज तो सारे B आ रहे. जी सर, ये ले लो. बोलो. Which of the following can completely represent force graphically? Anyone? बोलो. Exactly. Force is देखो, I say, ध्यान से सुनिए सर. I say this is the force. How can I specify it completely? You should know the magnitude. You should know the point where it is applied, and you should know the direction also. Point of application, direction and magnitude. See, Hare Baba. Is it okay? Wonderful students of India. Very good. ये ले लो. ये ले लो sir. Come on, answer. Come on, dear students, answer. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. The XY plane is a plane of couple. In XY plane, there is a couple. Couple is nothing but turning moment. So if it is rotating in XY plane, it is rotating about Z axis. So therefore, if I write 25, it is about Z axis. So in the XY plane, if it is anyone, what is the answer, sir? What is the answer? It is rotating about Z axis. Z axis means K. So if it rotates clockwise, we take minus.
इफ इट इज एंटी क्लॉकवाइज वी टेक प्लस, दैट कन्वेंशन विल बी गिवन। बहुत ही अच्छा है सर। सो ठीक लग रहा है सर आज? प्यारे दोस्तों, आज के क्वेश्चंस ठीक लग रहे हैं रे बाबा? या अल्लाह, या परवदिगर, या बंदे नमाज, मेरे बच्चों को क्या हो रहा है? नेक्स्ट, ये ले लो, ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं, ये कर रहा हूं रे, ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं, ये कर रहा हूं रे। On which laws of thermodynamics is the measurement of temperature based? It is zeroth law of thermodynamics. First law is conservation of energy. Second law deals with directional law. ठीक है, बहुत बढ़िया, ये ले लो, करो, कम ऑन कम ऑन। सर हमें कुछ इंफॉर्मेशन मिला, पता नहीं कहां से लाए, लेकिन क्वेश्चंस तो लाए, लेकिन क्वेश्चंस तो लाए। मैं ये भी बोल रहा हूं सर, 4-5 क्वेश्चंस तो लग जाएंगे यहां से, 4-5 तो लग जाएगा, देखते जाना। मेरे प्यारे दोस्तों, cetane and octane, they are alkanes, and alkanes होते हैं CnH2n plus 2. Which of the following is correctly matched? Which of the following is correctly matched? इधर देखो सर, C10, C10 मीन्स C16, अगर 16 है तो 16 to 32, अगर C16 है so it should be 32 plus 2 34, so this is wrong. Ethanol, what is ethanol? C2H5OH, it is correct. Isooctane, octa means 8, so if N is 8, 8 to 16 plus 2 18, so it should be 18 here, C88 H18, ये wrong है. टेट्रा इथाइल लेड, दिस इज CH, कार्बन एक है तो मीथेन, कार्बन 2 है तो इथेन, सो हियर इट इज टेट्रा इथाइल है, ये इथाइल नहीं होता है सर, मिथाइल, CH3 इज मिथाइल, सो इट इज टेट्रा मिथाइल लेड, तो इट शुड बी C2H5, इट शुड बी समथिंग लाइक C2H5, टेट्रा मीन्स 4, लेड मीन्स Pb, तो टेट्रा इथाइल, इथेन मीन्स 2 आता है, तो ये भी गलत है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। इज इट ओके सर? इज इट ओके माय डियर स्टूडेंट्स? एग्जैक्टली BEL पैटर्न का क्वेश्चंस आ रहा है सर, देखते जाना। ओके सर, सब लोग बोलो रे एक बार, ओके सर बोलो सब लोग। नेक्स्ट, simple question, which one of the following is an intensive property independent of mass? Energy is extensive, entropy is extensive, volume is extensive, density is intensive. Answer A. Is it okay sir? चलो, अब दो आंसर, अब दो आंसर, अब दो आंसर। क्वेश्चन नहीं समझ रहे सर, क्वेश्चन नहीं समझ, नो 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 नो, व्हाट 11 यार, व्हाट डू मीन बाय 11? 11th का ही कर रहे हैं। He said volume of the gas alone, सिर्फ वॉल्यूम है, दिस विल टेक केयर ऑफ प्रेशर, मॉलिक्यूल, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, P प्लस A बाई वी स्क्वायर, मतलब प्रेशर को भी हम ऐड कर रहे हैं, तो V माइनस बी वॉल्यूम को भी इंक्लूड कर रहे हैं, तो ये होगा नहीं, वॉल्यूम अलोन, ये तो है ही नहीं, सो ये नहीं। You know, Redlich-Kwong equation is also similar to this. इसमें भी take care of pressure and volume, but it is the only equation which takes care of volume. This is the equation which takes care of volume. ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर, इट इज द ओनली इक्वेशन विच टेक्स केयर ऑफ वॉल्यूम। देखो देखो, मेरे पास कुछ इंफॉर्मेशन मिला तो मैं ये क्वेश्चंस दे रहा हूं, कल एग्जाम में यही आए तो मुझे ब्लेम मत करना आपको कहां से मिला, ठीक है? चलो,
ये करो, रेडी है सर? प्लीज एक्सप्लेन 11। यही तो है ना, ये 11 ही है ना रे, ये 11 ही है ना रे, मैं बोल रहा हूं। ही सेज विच वन विल टेक केयर ऑफ ओनली वॉल्यूम, दिस विरियल इक्वेशन विल टेक केयर ऑफ वॉल्यूम अलोन, मतलब मॉलिक्यूल्स आर ऑक्यूपाइंग सम वॉल्यूम, ये लेता है। इसमें ओनली अलोन बोला है, तो इसमें प्रेशर भी लेता है, वॉल्यूम भी लेता है, इसमें प्रेशर भी लेता है, वॉल्यूम भी लेता है। इट हैज नथिंग टू डू विथ इक्वेशन ऑफ स्टेट, क्लॉजेस इक्वेशन हैज नथिंग टू डू। अभी भी समझ में नहीं आया सर? ये करो, मेरे बोले रे आया नहीं है। मुश्किल है सर आपको पढ़ाना, अब मेरे से नहीं हो पाएगा सर से। Moist air is a mixture of air and water vapor. Hence, three independent properties are required to fix the state. Psychrometric chart, however, uses two properties to fix the state. Why? See, एक बार बताता हूं. This is a psychrometric chart. So, in psychrometric chart, the specific humidity is taken on y-axis, the dry bulb temperature is taken on x-axis. Suppose I give you two parameters. Say, for example, the dry bulb temperature is say 20 degrees centigrade and omega is 0.00628. Okay, can you locate the point? Dekho, omega is say 0.0068 and the dry bulb temperature is 20. Can I locate the point? Yes. So actually, you need three parameters to locate the point on psychrometric chart. You need three, but he says only two are required. Why? Let me tell you very clearly. You know, if you take air, it is a two component system. One is dry air, one is water vapor. So it has a two component system. Dry air is one component, water vapor is another component. So how many phases are there, sir? एक बार बताओ, how many phases are there? If you see air, it is completely in gaseous state. I repeat, sir, if you see air, it is in completely gaseous state. Whether it is water vapor or dry air, it is completely in gaseous state. So number of phases are 1. So apply Gibbs phase rule. P plus F is equal to C plus 2. So F is equal to 3 RF. But actually, you need three properties to fix the state. But यहाँ पे तो psychrometric chart पे तो दो से ही चल रहा है. Why? Can anyone tell the reason? On he says psychrometric chart पे दो पे ही चल रहा है. Why? The reason is this chart is drawn for a fixed pressure. ये chart, whenever you are drawing a psychrometric chart, it is drawn for a fixed pressure. So suppose you are drawing for normal air conditioning. So you will be drawing this for atmospheric pressure. Means out of three, one is already fixed. What is that fixer? Atmospheric pressure is fixed. So out of three, एक already fixed हो गया. तो बचे कितने? दो. Therefore, he is asking the reason. However, on psychrometric chart uses only two properties. Why? Why? Because the psychrometric chart nahi. The chart assumes for nahi. The psychrometric chart is drawn for a fixed atmospheric pressure. This is a very very important question, sir. सब लोग इसको नोट कर लेना, ठीक है? सब लोग इसको नोट कर लेना. क्या सर जी? नेक्स्ट ये करो. सब मिलता रे, सब मैं दे दूंगा, सब मैं दे दूंगा. वो काहे चिंता करता? What is the center of buoyancy? Where is center of buoyancy? It is at the centroid or the center of gravity of the displaced volume. Yes or no, sir? It is the centroid or center of gravity of the displaced volume. Centroid of the displaced volume of the fluid. It is correct. I think ये तो direct question है. ये करो. Come on, do it. Let's not waste time. Come on, you people have to do. Think that you are in examination hall. Sir, numericals. ये क्या है? कैलकुलेटर चाहिए क्या? You don't need any calculator.
डोंट थिंक दैट इट इज द न्यूमेरिकल बेस, ना ना ना। देखो, velocity vector is given by 3x plus 2y I cap plus 2z plus 3x square j cap plus 2t minus 3z k cap। एंड एनीवन आंसर मिलेगा इसका? एनीवन? देखो, दिस इज आवर u, दिस इज आवर v एंड दिस इज आवर w। बताओ सर, x इज, देखो एक बार, x0 y0 कितना आसान है सर कैलकुलेट करना। x0 y, देखो x0 y0 z2, when x is 0 this is 0, y is 0 this is 0, तो u is becoming 0। बहुत सिंपल है सर। x0 तो ये 0 बन जाएगा, z is 2, z x0 तो ये 0 है, z is 2, 2 into 2 is 4। ठीक है सर, यहां पे t is how much sir? t is 2 second, 2 into 2 4 minus 3 into z is 2, 3 into z is 2, how much is this sir? I think you are getting this as minus 2। excellent। so your velocity is u square plus v square plus w square, so therefore u square is 0 square, v square is 4 square plus ये कितना आ रहा है सर? minus 2 का स्क्वायर, करेक्ट ना सर? minus 2 स्क्वायर, सही है गलत है? तो 16, तो इट इज रूट ऑफ 20। व्हाट इज रूट ऑफ 20 सर? व्हाट इज रूट 12? सही है। सो क्या हुआ? लैग हो रहा है, पता नहीं आज मतलब क्या प्रॉब्लम है, एक बार रेक्टिफाई कर लेता हूं सर मैं। नाउ इज इट फाइन? बार बार हो रहा है या फिर नाउ क्लियर सर? मैं कोशिश करूं, पता नहीं ये क्यों हो रहा है। नेटवर्क तो सही है सर। चलो ये करो, कम ऑन डू इट सर, कम ऑन डू इट सर। मजा मजा बोलो सर, लोग एक बार, मजा 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 मजा। कोई भी नहीं बोल रहे, देखो मजा मजा मजा। इनको पढ़ाना क्यों रे मैं? इनको पढ़ाना क्यों रे? इज एवरीथिंग फाइन? अरे आप मजा 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 नहीं बोल रहे क्यों रे? मजा नहीं आ रहा इसलिए। रोशन अकेला ग्रेट है इस बैच में। देखो देखो, COP is equal to refrigeration effect by work input। You know, this is the entry to the evaporator, this is exit from evaporator, from here to here during the process 4 to 1 heat is absorbed। so what is the refrigeration effect? This much is the energy absorbed, so refrigeration effect is H1 minus H4। and what is the work input sir? The compressor work input is from 1 to 2, so it is H2 minus H1। so applying steady flow energy equation, neglecting potential kinetic energy changes। okay, now मेरे प्यारे दोस्तों, COP पूछा है ना सर? देखो, what is H1 सर? H1 it is 300 and H4, देखो ये H4 है 0.4, so H4 is 150 by H2, what is H2 sir? 330, this is 330 minus H1, where is H1? already it is 300, so therefore do you need calculator? 350 minus 150 is 150 by ये कितना है सर? 30, तो कितना आ रहा है? is it 5? is option C correct? सर ये बात बताओ, what is the state of refrigerant at 4? very good। देखो देखो, someone asked me a question, sir what is the state of refrigerant at 4? it is in the wet region, so at this state when the throttling of a fluid is taking place, some liquid vaporizes due to throttling, and यहां पे there is some liquid, there is some vapor। ध्यान से सुनिएगा, यहां पे जो लिक्विड है, बहुत अच्छा पूछे, देख एक सेकेंड, it is in the wet region, whatever the liquid is there, it is actually at this state,
वॉट एवर वेपर इज देयर इट इज एक्चुअली एट दिस स्टेट। जो ऑलरेडी वेपर यहां पे है वो तो हीट नहीं लेगा, जो वेपर लिक्विड यहां पे है दैट ओनली विल एब्जॉर्ब हीट। इज इट ओके सर? अभी कुछ बोलना है सर? नहीं, वेरी गुड। ये करो, ये कर रहा, वो कर रहा, ये कर रहा रे, ठीक चल रहा है सर? अरे यार भाई बंधु, ठीक चल रहा है या दुकान बंद करूं? बोलो सर जी। फाइन ना, वेरी गुड। नहीं, आप कमेंट क्यों नहीं कर रहे सर? वेरी सैड। ए वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेटर हैज अ सीओ है, कलर दूसरा कर ले लेंगे। हाँ, सीओपी इज गिवन एज 3 if the work absorbed by the compressor is 25 kilowatt। ठीक है सर। What would be the heat rejected in condenser? Okay, COP is equal to refrigeration effect by work input, and you know the COP is 3, refrigeration effect by the work input is 25, so therefore RE is equal to 75 kilowatt। क्या ये आंसर सही है सर? क्या ये आंसर सही है सर? Is this the correct answer? I'm asking, is this a correct answer? No. Why the answer is no, sir? क्यों नो है? देखो एक बार, this is the storage, this is the refrigeration effect, this is the refrigerator, and there is a work input of how much, sir? 25, and the refrigeration effect is 75, and all the heat is rejected। देखो ये सराउंडिंग्स, ये कंडेंसर में ये रिजेक्ट हो रहा है, मतलब ये पूछा है सर, इन द कंडेंसर मींस इन द कंडेंसर whatever it is absorbing and whatever the work input is given, put together it is giving to the surroundings. This is the heat is asking, that is the heat rejected in condenser. So this is entering, this is entering, total entry should be equal to total exit, so Q2 will be equal to 75 plus 25, so therefore the correct answer is 100। anyone got this answer sir? किसी को आया सर? क्या बोला है? हे भगवान। हाँ रोशन, तू, इसका मतलब क्लियरली ये है कि तू मेरा आरएसी नहीं पढ़ा है। तो स्टोरेज से हीट लेगा, कौन लेगा? रेफ्रिजरेंट लेगा। दैट्स वाई द स्टोरेज हीट, वॉट एवर फूडस्टफ्स यू आर कीपिंग, फ्रॉम देयर इट एब्जॉर्ब्स, सो इट इज सप्लाइंग लेटेंट हीट। ठीक है सर जी, ओके सर। आंसर दीजिए। विच ऑफ द कॉलम्स हैव इफेक्टिव लेंथ ट्वाइस द वैल्यू ऑफ एक्चुअल लेंथ? एनीवन? एनीवन? वेरी गुड सर। अगर एक एंड फिक्स है, दूसरा एंड फ्री है, तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस। देखो, सो ये होगा, आप ये सब सॉम में पढ़ाया था सर, एंड दिस इज एल, सो देयर फोर ट्वाइस इट विल बी फिक्स्ड, एक एंड फिक्स्ड एक फ्री, सो देयर फोर ये सही है, फिक्स्ड फ्री। इज इट ओके सर? इज इट ओके? अंडरवर्ल्ड ऑन, वेरी गुड सर। ये करो, नाउ करो, देखते हैं सर। प्लीज डू दिस क्वेश्चन, करो, मेहनत करो। बहुत बढ़िया चल रहा है सर, मुझे लग रहा है ये अच्छा होना चाहिए क्लास। देखो, नो न्यूमेरिकल, मस्त, आपको न्यूमेरिकल नहीं चाहिए। समीर राजा, देखो बेटा, मुझे कोई क्वेश्चन पेपर भेजो ना, मुझे, आई हैव नॉट सीन द क्वेश्चन पेपर। एनीवन हैज क्वेश्चन पेपर इस नंबर पे? अगर आपके पास बीएचईएल का क्वेश्चन पेपर है तो इस पे भेज देना, मैं एनालाइज करूंगा क्या कट ऑफ हो सकता है। विदाउट सीइंग हाउ कैन आई डू? ओके, एनीवन विद दिस आंसर?
critical Euler buckling load for a column of diameter d. So when the diameter was d, the buckling load was p. If the diameter is reduced to d by 2, what is the buckling load? And we know clearly the buckling load is given by pi square EI by L square. Very good. And it is a circular cross section है. तो क्या होगा सर? So P is equal to pi. एक काम करते हैं सर. एक काम करते हैं सर. Can I write P is proportional to I? बोलिए सर. Because the Young's model material is not changing, L is not changing. Only I is a geometrical quantity. It depends on the dimensions. So therefore, it is circular. So P is proportional to what is I? Pi by 64 d power 4. So the critical load I is proportional to d power 4. I is pi by 64 d power 4. So I is proportional to d power 4. तो ऐसा लिखेंगे. तो P2 by P1 is equal to d2 power 4 by d1 power 4. Is it correct, sir? P2 by P1 is d2. Yes, sir. So P2, what is the original load P? The original load is P and the final diameter is d by 2 का whole power 4 and the initial diameter is d. तो ये क्या होगा सर? P2 by P is equal to d power, अरे ये भी तो d power 4 है ना सर, ओरिजिनल डायमीटर. तो आई थिंक यू आर गेटिंग 1 by 2 power 4. 2 power 4 is 16. तो P2 is equal to P by 2 power 4 is 16. I think anyone got this answer, sir? किसी को ये आंसर आया सर? ध्रुव पंचल ट्यूटोरियल. हे भगवंता नमो नारायण पार्वती हर हर महादेव शंभो शंकरा. कम ऑन, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे सर. देखो देखो कैसा चल रहा है सर. आधे घंटे में 20 क्वेश्चंस किए सर. वी आर नॉट वेस्टिंग एनी टाइम. वाह देखो, what property is used to draw wires on the application of tensile force? Ductility. Simple questions. एक एक बार जान खाएंगे सर. ये करो, ये करो, वो करो, ये करो रे, ये करो, वो करो, ये करो रे, डा 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 डा. मजा आ रहा है सर. आपको पढ़ा के मजा आ रहा है सर. पढ़ा के मजा आ रहा है. देखो, Whitworth quick return mechanism is obtained. Very good, sir. You know, Whitworth quick return mechanism is obtained by fixing the original crank, the original shortest link of the parent slider crank mechanism. So it is an inversion of single slider crank chain. So therefore, ये इसका है sir, single slider crank का. Anyone got the answer? बी केयरफुल, बी केयर. सारे सब्जेक्ट्स के आ रहे देखो सर, ऑल सब्जेक्ट्स. वाह वाह, ये करो. मैकेनिज्म, मैकेनिक्स. Greatest height. A particle is projected upwards with an initial velocity u. G is the acceleration rate. Then which of the following is the greatest height attained by anyone? ये भी नहीं है तो क्या करेंगे सर? Is u square by 2g correct? मुझे पता नहीं सर. H is equal to ut minus half gt square. ठीक है सर. Correct? Or it can be written as v square minus u square is equal to 2gh. Correct है सर. So when you are throwing it upwards, these equations must be used
only when the acceleration is constant, but the body is thrown, the acceleration is constant. ठीक है सर? देखो, here you are throwing with a velocity u, and this is the topmost point. Here the velocity is 0, and you are moving against the gravity, so it will be minus g आएगा. So at the highest point, what is the velocity? 0. So minus u square is equal to minus 2gh, or h is equal to u square by 2g. क्या ये सही है सर? Is it correct? लेखराज क्या हो रहा है? लेखराज क्या हो रहा है? लेखराज अंडरवर्ल्ड डॉन भी सही दिया फाइनली. ये करो. तगरी तगनंदना नंदनंदना आ. आंसर आंसर श्योर. अरे अल्फा टी नहीं होगा रे. स्ट्रेस अल्फा टी, थर्मल स्ट्रेस अल्फा टी नहीं होगा. सी द वर्ड, सी द वर्ड. द प्रॉब्लम, मैं थोड़ा कॉशन देता हूं सर, कॉशन देता हूं सर. एट व्हाट हैपेंस, थर्मल स्ट्रेस अल्फा टी माइंड में आता है, तो है सिंपल है, अल्फा टी दिख भी रहा है, तो ये टिक करते हैं सर. बिकॉज एग्जामिनेशन में क्या होता है ना, समटाइम्स वी डोंट रीड क्वेश्चन कंप्लीटली, तो आपको क्वेश्चन पूरा पढ़ना है सर. तो इट इज अ free bar of length is heated uniformly from and the question to thermal. Okay, which of the following is stress? Whenever it is free, the stress is zero. Zero. Is it okay? Is it okay, sir ji? Yes. Excellent. मैं भूल गया सर, ये बहुत दिन हुआ सर. क्या ये इक्वेशन सही है सर? Is this equation correct, sir? Is the first equation correct, sir? The modulus of elasticity and shear modulus सही है? अरे बोलो रे. हाँ, अंडरवर्ल्ड डॉन अकेला बोला है, बाकी क्या लोग? नो. E is equal to 3k into 1 minus 2 न्यू. क्या ये सही है सर? आई डोंट नो सर, बिकॉज आई फॉरगॉट. सीरियसली आई फॉरगॉट, मैं भूल गया सर. अगर गलत है तो मेरा कोई इसमें लेना देना नहीं है सर, बिकॉज आई एम टीचिंग सो मेनी सब्जेक्ट्स, तो मुझे याद नहीं रहता. फ्रेश जो पढ़ा रहा हूं वही याद रहता है मुझे. इज इट अंडरवर्ल्ड डॉन? Only underworld dawn is okay. Now this is E, this is E. So equate this to 1 minus 2 nu. What did he say? He said same values of rigidity modulus and bulk modulus. Rigidity modulus and bulk modulus. तो क्या होगा सर? सेम है, कैंसिल कर देना. 2 plus 2 nu is equal to 3 minus 6 nu. 3 into 1. Okay, you bring it to this side. Correct now? 8 nu is equal to 3 minus 2 is 1. So nu is 1 upon 8. I think you are getting 0.125 if I am not wrong. बिल्कुल सही है सर. कैलकुलेटर की जरूरी है सर? नहीं. अच्छा, म्यू का फार्मूला रटा हुआ है. क्या रटे हुए है सर म्यू का फार्मूला? क्या रटे हैं सर म्यू का फार्मूला? ठीक है. डल डल डा 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 डल 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 डा. आंसर. बहुत बुरा हाल है सर आपका. इन रीजनरेटिव cycle, what is happening? No, 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 no. No, sir.
रीजनरेटिव रैंकिन साइकिल में व्हाट इज हैपनिंग टू द मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन? सर आप लोग देखो देखो, क्या हो रहा है सर, आपको क्या हो रहा है सर? ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। एक बार रीजनरेटिव साइकिल, नो नो नो, एक बार रीजनरेटिव साइकिल, नो नो नो, it is actually whenever I talk about mean temperature of heat addition, it is with respect to vapor power cycle, sir. Vapor power cycle, sir. A is the right answer. Wait, wait, wait. यही तो कंफ्यूजन, इधर देखो, इधर देखो, एक सेकंड। So if I expand this very deeply to very low temperature and reheat, will the mean temperature increase? No, sir. So reheating in vapor power cycles may or may not improve efficiency. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। I taught very clear. Yes, regeneration improves heat. क्या बोलते हैं? It improves regeneration in vapor power cycle, improves the mean temperature of heat addition. So therefore, it is the right answer. लेकिन हाँ, बी केयरफुल सर, ये इज द राइट आंसर। मतलब फंस गए सर आप। आई थॉट यू आर सो इंटेलिजेंट, वेरी सैड। ये करो, कम ऑन कम ऑन। What are the characteristics of Brayton cycle? You know Brayton cycle? Brayton cycle is isentropic compression, constant pressure heat addition, isentropic expansion, constant pressure heat rejection. So this is on PV diagram, correct? So isobaric heat addition is the right answer. So isothermal heat release, no. Isocoric, isocor तो होता ही नहीं, isothermal तो होता ही नहीं. So it is correct. Okay, sir. Do you want me to stop, sir? Do you want me to stop, sir? क्योंकि I am not getting any interest from you people. Very good. ये लीजिए, ये लीजिए सर। Come on, come on, come on. Actually क्या होता है ना, when you are, when there is a closure of the wall or like when there are sudden changes in the load, तो क्या होता है ना, when the walls are closed or so, तो क्या होता है, water hammering के कारण प्रेशर्स फट जाते हैं सर, ड्यू टू हाई प्रेशर। तो सर्च टैंक क्या करता है, टेम्परली पानी उसमें स्टोर कर लेता है सर, टेम्परली। इट्स समथिंग लाइक दिस, देखो। तो वॉट एवर चेंजेस आर कमिंग इन दिस पाइप, तो क्या होगा, इट विल बी गोइंग टू दिस, यहां पे रिलीज हो जाएगा सर सर्च टैंक में। सो देयरफॉर टू प्रोटेक्ट पाइपलाइन ड्यू टू प्रेशराइज व्हेन वाटर इज ब्रॉट टू रेस्ट सडनली। बिल्कुल सही है सर। एनीवन गॉट दिस आंसर? एनीवन गॉट द आंसर सी? यस। हाँ, सी। आप एक काम करो सर, आप आंसर मत देता, क्वेश्चन नंबर डाल के आंसर दो, बिकॉज किसका आंसर दे रहा है, आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड। ठीक है, इसका आंसर क्या है? अब देखो कोई भी नहीं दे रहे। क्वेश्चन नंबर 27। क्या हो रहा सर आपको? क्वेश्चन नंबर 27, हाँ ऐसा दे दो। अब्दुल रहमान, अमरेश, वेरी गुड। लेखराज, देखो कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होता है सर, ये भी नहीं आया तो हम क्या करेंगे? इट इज द मास कंजर्वेशन, कंटिन्यूटी ऑफ मास। हे भगवान,
ये करो। एक सेकंड प्लीज। हेलो सर। గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ, నేను వస్తాను. ఓకే, క్లాస్లో ఉన్నాను నేను. షూర్ షూర్, ఐ కాల్ యూ సార్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. ఓకే ఓకే. एनीवन 28 का आंसर? बहुत बढ़िया. प्लीज अमरेश, हैव यू यूज्ड कैलकुलेटर? अमरेश, हैव यू यूज्ड कैलकुलेटर? People, those who got the answer, did you use calculator? No रे बाबा. बी क्यों कैलकुलेटर यूज कर रहे सर? देखो, बहुत सैड. लेट मी चेक वेदर आई कैन डू इट विदाउट कैलकुलेटर और नॉट. इट इज अ डीजल साइकिल ना सर. देखो, what is the value of cutoff ratio? The cutoff takes place at 6% of the stroke, and you know the maximum volume and the minimum volume. The piston is sweeping between this, so this volume we call it as swept volume. So the swept volume is V1 minus V2. What does cutoff mean? The fuel supply is starting at 2. This is compression of the fluid. The fuel supply is starting here and the fuel supply is cut off here. So therefore, what is the cutoff volume, sir? V3 minus V2. V3 minus V2. दोबारा बता रहा हूं सर. Fuel supply is starting here, ending here. So cutoff volume is V3 minus V2. But what is cutoff given? 6% of stroke volume. This cutoff volume is given as 6% means 0.06 of the stroke volume. What is the stroke volume, sir? V1 minus V2. This is given. The cutoff takes place at 6% of the stroke. ठीक है sir. अभी कुछ दिया. And the compression ratio is also given. What is compression ratio? Volume before compression to the volume after compression. That is V1 by V2. And that is given to us as 14. Very good, sir. So I want cutoff ratio. Can you tell me what is cutoff ratio? Volume after the heat supply to the volume before heat supply. So V3 by V2 is cutoff ratio. Excellent, sir. So now you divide both sides with V2. So V3 by V2. Very good. Minus V2 by V2 is 1. You divide both sides with V2. So 0.06. You divide with V2. So V1 by V2 minus 1. Excellent, sir. What is V3 by V2? Cutoff ratio. Minus 1 is 0.06 into V1 by V2 is compression ratio 14 minus 1. So, my dear students, 14 minus 1 is 13. 13,678. So, RC minus 1 is equal to, don't use calculator, 13 into 6, 13,678. But there are two decimals. So, it is 0.78. So, RC will be equal to 1.78. Is that option available? Yes. So, please, it's a request to all of you. Do not use calculator. बहुत बढ़िया. आंसर दीजिए. Answer. Write question number and give answer. So, if you are plotting the efficiency of Otto cycle is, what is the efficiency of Otto cycle, sir? 1 minus 1 by R power gamma minus 1. When I am increasing the compression ratio, the efficiency is increasing. When I am increasing gamma, because देखो ध्यान से सुनो sir, if I increase gamma,
this power will increase. When I increase gamma, the power will increase. This denominator will increase. When the denominator is increasing, this value will decrease. Negative decrease means efficiency will increase. So when I increase gamma, the efficiency will increase. Let me repeat, sir. जब गामा बढ़ रहा है तो ये पावर बढ़ेगा, तो दिस पावर मींस दिस वैल्यू विल इंक्रीज. जब ये डिनोमिनेटर का वैल्यू बढ़ रहा है तो ये टोटल वैल्यू घटेगा. नेगेटिव घट रहा है मींस दिस वैल्यू विल इंक्रीज. नेगेटिव इज डिक्रीजिंग, यू आर सब्सट्रैक्टिंग लेस, तो एफिशिएंसी विल इंक्रीज. So if I am plotting the efficiency, here I take compression ratio and here I take efficiency. And you know, when the compression ratio is 1, 1 power something is 1, 1 by 1 is 1, 1 minus 1 is 0. So when the compression ratio is 1, the efficiency is 0. So the graph will be something like this. So this is for gamma is equal to 1.2. This is for gamma is equal to 1.4. This is for gamma is equal to 1.67. So for a given compression ratio, if you observe, for a given compression ratio, the efficiency with this gamma is only this much, and efficiency with gamma more than this is more, and efficiency with gamma greater than 1.67 is much more. So as gamma is increasing, the efficiency is also increasing. So 1.2 का efficiency कम होगा compared to 1.4 compared to, so I think B option is the right option. Is it correct, sir? बोलो. ये करो. Good. Underworld Dawn is great, but that's it. Anyone? A gas turbine cycle with large number of stages of compression and expansion leads to. इधर देखो सर. Actually, let me plot this. ये भी important है सर. देखते हैं सर. Now we'll see. Isentropic compression, constant pressure heat addition, isentropic expansion, ये है गैस टर्बाइन साइकिल सर. दिस इज अ गैस टर्बाइन साइकिल. ये हमारा गैस टर्बाइन साइकिल है सर. ठीक है. नाउ ही सेज, अब देखो सर, लार्ज नंबर ऑफ कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन, compression intercooling, compression intercooling, compression intercooling, compression intercooling, compression intercooling, then compression heat supply, then expansion reheating, expansion reheating, expansion reheating, expansion reheating, then total ये वाला. This is a constant pressure process. This is a constant pressure process. ठीक है सर. Now, many stages of compression expansion. So you know this can be यहाँ पे temperature, यहाँ पे entropy. This is almost a horizontal line. We can approximate it by a horizontal line, and this also can be approximated it by a horizontal line. So this is a constant temperature. This is a constant temperature. Now our cycle gets reduced to two isothermal to constant pressure. Two isothermal to constant pressure is known as Ericsson cycle. इधर देखो. This is our Ericsson cycle, sir. This is our Ericsson cycle. So my gas turbine cycle with many stages of intercooling and reheating will get reduced to Ericsson cycle. ये भी बहुत important है sir. This is a very very important question. ठीक है sir? क्या टू? अच्छा, आपको एटकिंसन साइकिल चाहिए? ओ माय गॉड, मैं भी भूल गया सर. वो भी सिमिलर टू गैस टर्बाइन साइकिल. दैट इज आल्सो सिमिलर टू गैस टर्बाइन साइकिल. ये करो, ये करो. राजू 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 राजू.
Come on, come on. Take this, take this, take this. कोई आंसर दिया सर इसका? 31B. Diverging portion of the nozzle. Who said B? सर खतरनाक स्टूडेंट्स है सर, मुझे अच्छा लग रहा है, अब आपको पढ़ाएंगे सर. बिफोर दैट आई वांट टू टेल यू सर्टन थिंग्स सर. इधर देखो. Let us assume this to be nozzle. Let us assume this to be diffuser. I can derive that. ध्यान से सुनो सर. Nozzle is used for increasing velocity at the expense of pressure, and diffuser is used for increasing. उल्टा है सर. Diffuser is used for increasing pressure at the expense of velocity. So in the nozzle, the Mach number will be less than 1 if it is converging, and the Mach number will be greater than 1 if it is diverging. So this less than 1 we call it as subsonic. If you want, I can derive. Already मैं अपने compressible flow में derive किया था. So Mach number greater than 1, it is a supersonic case. So अगर diffuser की बात कर रहे हैं तो converging portion में Mach number will be greater than 1 and diverging portion में Mach number will be less than 1. So this is known as, देखो, supersonic. Whenever Mach number is greater than 1, supersonic. Whenever it is less than 1, it is subsonic, sir. ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर. रेगुलरली वी आर फाइंडिंग दीज क्वेश्चंस. रेगुलरली ये बहुत आ रहे हैं सर, बहुत आ रहे हैं. देखो, if the Mach number is less than 1, this converging portion will act as a nozzle, मतलब velocity बढ़ेगा. If the Mach number is greater than 1, it will act supersonic nozzle में. ठीक है सर. तो अब सवाल ये पूछ रहा है, अब देखो, what is this question as? कहां गया रे वो क्वेश्चन? डाइवर्जिंग पोर्शन. इधर देखो, देखो देखो, ये डाइवर्जिंग पोर्शन, ध्यान से सुनो सर. दिस डाइवर्जिंग पोर्शन, कैन आई कॉल इट एज सुपरसोनिक नोजल? डाइवर्जिंग पोर्शन सुपरसोनिक नोजल? यस सर. दिस डाइवर्जिंग पोर्शन, कैन आई कॉल इट एज सबसोनिक डिफ्यूजर? सबसोनिक डिफ्यूजर, सुपरसोनिक नोजल. सब यस और नो सर? Subsonic diffuser, supersonic nozzle. So 2, 3, yes, it is the right answer. Clear? If you have derived this in my regular classes, जो when I teach you compressible fluid flow, उसमें I have derived this clearly. ठीक है सर? ये वाला ले लो. ये कर रो, वो कर रो, ये कर रो रे, ये कर रो, वो कर रो, ये कर रो रे. वे ऑलवेज रिमेंबर, शॉक वेव्स फॉर्म होने के लिए इनिशियल फ्लो मस्ट बी सुपरसोनिक. इफ द फ्लो इज नॉट सुपरसोनिक, शॉक वेव्स कैनॉट बी फॉर्म्ड. दिस ऑल्सो आई हैड एक्सप्लेन्ड इन माई कंप्रेसिबल फ्लूइड फ्लो. सो फ्लो को सुपरसोनिक होना पड़ता है सर. देन ओनली when the shock wave is formed, it will get converted into subsonic. अब देखो, वो पूछ रहा है, where is the shock wave felt in nozzle? ध्यान से सुनो, शॉकवेव होने के लिए फ्लो शुड बी सुपरसोनिक. नोजल की बात चल रही है सर, यहां पे नोजल की बात चल रहा है. मैक नंबर इज लेस देन 1, मैक नंबर इज ग्रेटर देन 1. देखो, वेयर इज द इफेक्ट ऑफ शॉक फेल्ट? शॉक वेव्स आर ऑलवेज फॉर्म्ड इन सुपरसोनिक. ये तो सुपरसोनिक है. तो इफ इट इज सुपरसोनिक, किस पोर्शन में शॉक आएगा सर? डाइवर्जिंग पोर्शन. सो इन द डाइवर्जिंग पोर्शन यू विल सी शॉक. इज इट ओके सर? अंडरवर्ल्ड ऑन. वाह, क्वेश्चन नंबर दे के आंसर देना सर. आप यू आर नॉट गिविंग क्वेश्चन नंबर, यू आर नॉट गिविंग क्वेश्चन नंबर सर. बहुत मुश्किल है सर. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैक नंबर इन द कन्वर्जिंग पोर्शन ऑफ द नोजल? कन्वर्जिंग पोर्शन में क्या होगा सर? कन्वर्ज नोजल, कन्वर्जिंग पोर्शन में मैक नंबर विल बी लेस देन 1. सर इतने क्वेश्चंस मैक नंबर पे दे रहे? यस यस, कुछ इंफॉर्मेशन है इसलिए दे रहे, बस ज्यादा नहीं. बस हम ज्यादा बात नहीं करेंगे आपसे.
Sir, any batch for already I have started so many batches. अभी रन हो रहा है ना अभी. In one batch I am taking Tom, in one batch fluid, and in one batch I am taking thermo. देखो, what is this process, sir? You know, the temperature is increasing from 0 to 1. Temperature is increasing, so it is definitely heating. And at the same time you are coming down, down, down. देखो नीचे आ रहा है, नीचे. Omega is decreasing, means it is dehumidification. Dehumidification. So it is heating and dehumidification. Where is that, sir? कहाँ गए रे? I think D option is correct, na? Is D option correct? Whenever you are giving, please, it's a humble request to all of you. Whenever you are giving answer, you write the question number and give answer. So let's take a break of 2 minutes. 2 मिनट का ब्रेक ले लेंगे. So 34 questions. मजा आया सर, वाह. ठीक है, 2 मिनट का ब्रेक ले लेंगे. ఎవరు ఏం రావట్లేదు కదా లోలో పెట్టిన క్లాస్ లేదు. चलिए, हे भगवान, ये क्या आ गया? आ गए सब लोग? आ गए सब लोग? नहीं आ रहा रे, नहीं आ रहा रे. Are you there? Are you there? Let's not waste time, sir. ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है. ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है. When are the wet bulb and adiabatic saturation temperature equal? थोड़ा याद रख लेना सर, क्योंकि ना जनरली व्हेन वी गो टू आवर साइक्रोमेट्री देयर आई विल बी डिस्कसिंग. एयर के लिए फॉर्चुनेटली क्या होता है, लुईस नंबर 1 होता है. लुईस नंबर इज अ नंबर
which tells us the behavior of both heat transfer और mass transfer होता है। तो इसीलिए लुईस नंबर 1 है एयर के लिए 1 होने के कारण बोथ वेट बल्ब टेम्परेचर एंड एडियाबैटिक सैचुरेशन टेम्परेचर आर सेम। ठीक है सर, ओके, इसको याद रख लेना। इफ यू वांट आई कैन एक्सप्लेन इन माय आरएसी। कम ऑन, वेरी गुड वेरी गुड, मजा 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 मजा, बहुत अच्छा चल रहा है सर, बहुत ही अच्छा चल रहा है सर, बहुत ही अच्छा चल रहा है सर। लुक एट, where does the instantaneous center of a piston of a slider crank lie? Anyone? Yes. तो स्लाइडिंग का मतलब रोटेशन विथ रेडियस इनफाइनाइट। ठीक है, डी डी, ठीक है सर। एनीवन? कंटिन्यूटी इक्वेशन डिफरेंशियल फॉर्म, रो ए वी इज कांस्टेंट। ठीक है सर, यू नो क्लियरली ना, 37 समवन सेट सी, देखते हैं सर। तो इसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएशन ऑफ रो इज डी रो इंटू ए वी, तो रो का हो गया, अब ए का रो वी इंटू डी ए प्लस वी का रो ए इंटू डी वी, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज 0, डिवाइड बोथ साइड्स विथ रो ए वी, दिस द कंटिन्यूटी इक्वेशन। तो ए वी कट गया, तो डी रो बाई रो प्लस सेपरेट करो, तो रो वी इज गॉन, डी ए स्टकअप हुआ, फिर अभी सही है सर, नॉट क्लियर, पता नहीं आज क्यों ऐसा हो रहा है, आई डोंट नो, नेटवर्क इज ऑल्सो गुड, नो डोंट नो सर, आइए बोलो। What is the depth of center of pressure in a rectangular lamina immersed in a vertical column up to a depth of h? देखो, एक रेक्टेंगुलर लैमिना को हम से फॉर एग्जांपल इमर्स किए, कितना डेप्थ तक इमर्स किए सर, h। ठीक है सर, सो विल देयर बी एनी हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन द टॉप, नो, इसलिए उसको निकाल देना सर। Very good. I think I have given in the class. So whenever this is the center of gravity, so where will be the center of gravity, sir? It will be at h by 2. So इसको मैं लिखूंगा x bar, okay. And I don't know this width, let it be some b. This is the centroidal axis. So you know the depth of center of pressure from the free surface is given by x bar plus ig by a x bar अगर वर्टिकल है, तो x bar is what is x bar, h by 2 plus ig, what is ig, moment of inertia of this area about this axis, it is bh cube by 12, तो bh cube by 12 ig is bh cube by 12, ig by area, what is the area, b into h, yes bh into x bar, what is x bar, h by 2. If you are calculating, you are getting this as 2h by 3, लेकिन ये याद रखना सर, आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू रिमेंबर दिस, सब लोग इसको याद रख लेना सर। आंसर नहीं है ना रे, आंसर हाँ है ना रे, है ना रे। आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू रिमेंबर, whenever the top edge coincides with the free surface, when the top edge, then the depth of center of pressure from the free surface is 2/3 of h. This is very very important sir, ये बहुत important है सर, ये आ सकता है, चलो लिख देंगे BEL 2025। कितने, हाउ मेनी क्वेश्चंस डिड आई लीक टुडे, आज कितने क्वेश्चंस लीक है सर?
तो आप ना 18th को 10 o'clock मेरा एक वर्कशॉप है सर, सारे प्रिपरेशन के रिलेटेड आई ऑल क्वेश्चंस आई विल क्लियर सर दिस संडे 18th। तो इट्स ऑन लाइक अन अकेडमी, फ्री है सर सबके लिए, वो प्लस क्लास पे, सॉरी प्लस नहीं, फ्री स्पेशल क्लास पे, ठीक है, एग्जैक्टली exactly. चलो कोई बात नहीं सर। 3 से 4, हाँ ये करो, ये करो। अच्छा, HMT बिल्कुल आ रहा है सर। देखो, अभी तो मैं एप्टीट्यूड और प्रोडक्शन के कुछ टॉपिक्स प्लान कर रहा हूं। थर्मो तो 2 दिन हुआ स्टार्ट हो गया। 39। द एंथैल्पी ऑफ अ स्टीम एंटरिंग द टर्बाइन इज 3000। आई एम सॉरी, okay, the enthalpy after isentropic expansion is 2400. The enthalpy at the end of actual, okay. What is the actual process, sir? 1 to 2 is the actual process. What is the enthalpy at the inlet to the turbine? At the inlet to the turbine is 3200. And after isentropic expansion, this is isentropic expansion. So H2S is given as 2400, sir. And what is H2, sir? Actual expansion के बाद, actual expansion के बाद, at the end of actual 2560. अब बताओ सर, अब बताओ, what is isentropic efficiency of the turbine or the turbine efficiency? It is the actual work by isentropic work. Actual work by isentropic. So what is the actual work, sir? 3200 minus 2560 divided by H1 is 3200 minus H2S is 2400. I think denominator is 800. No use of calculators. Calculators use mat karna, sir. So if you use calculators, I'll cut your fingers. I'll cut your fingers. क्या ये सही है सर? 640। अभी आपको कैलकुलेटर चाहिए सर? 64/80, 10 8 tens, 8 eights, so therefore it is 0.8. If you want in percentage, it is 80%. Is B correct, sir? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर। ये मत बोलना सर बीएल में न्यूमेरिकल नहीं आते, अगर आते तो तब क्यों नहीं बोले सर? आपको कुछ दमक नहीं है क्या? न्यूमेरिकल्स आ भी सकते ना, क्यों नहीं करवाए? तब ऐसा बोलते आप ये भी बोलते, ये भी बोलते, आपको सब आता क्योंकि आप भगवान हैं। What is the ratio of slope on PV curves for adiabatic process to isothermal? देखो, adiabatic slope मैं एक्चुअली डिराइव भी किया था सर, गामा टाइम्स आइसोथर्मल स्लोप, थर्मो में डिराइव किया था। सो व्हाट इज द रेशियो ऑफ adiabatic slope to isothermal slope? It is gamma. Is C option correct, sir? बहुत बढ़िया रे। Do it, do it, do it.
What is the molecular weight for the gas whose specific heats are given? देखो, Cp minus Cv is equal to R. तो Cp is 1.967, Cv is 1.507. So 0, 6, ये कितना आ रहा है सर? ये कितना आ रहा है सर? कितना आ रहा है सर? ये कितना आ रहा है सर? 4. So 0.46 आ रहा है सर. And this is the value of R. R is equal to R bar by molecular weight. तो molecular mass is R bar by R. कहां गए रे? R bar molecular mass is equal to R bar by R. अरे यार कंफ्यूज हो गए बच्चे. देखो देखो, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इज इक्वल टू सॉरी, कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट इज गिवन बाय characteristic gas constant is given by R bar by M. So therefore, already the characteristic gas constant is 0.46. R bar is 8.314 by M. So M will be equal to 8.314 by 0.46. मुझे लग रहा है 0.46 टू वाटर का लग रहा है सर, 18 कुछ लग रहा है सर, मेरे को कुछ 18 लग रहा है सर. देखते हैं सर. ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड. देखते हैं देखते हैं. क्लोज आंसर्स हैं सर. 18 कुछ आ रहा है ना सर? सी आ रहा है सर. सी आ रहा है सर. एक बार कैलकुलेटर से भी चेक करेंगे. मैं तो कैलकुलेटर यूज नहीं किया सर. 1.967 minus 1.507, 0.46. R is equal to R bar by M. M is into 8.314. 18.07 is correct. 18.07. देखो देखो, 18.07 is correct. बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही है. मैं तो कैलकुलेटर यूज नहीं किया. वाह, तू ग्रेट है रे. विच वन टू चूज बोलता है. 18.0 का मतलब 18 ही आ रहा है. 18.0 समथिंग आ रहा है तो 18 ही ले लेना. ट्रू, ट्रू रोशन राज, ट्रू. अरे यार, इसको कैसा बुरा यूज करते सर. मैं आपको एक इक्वेशन डिराइव किया था. ओमेगा इज इक्वल टू 0.62 पीवी बाई पी टोटल माइनस पीवी. ये कहां से आया सर बोलो? ये कहां से आया सर बोलो? आर बार बाई 29 बाई आर बार बाई 18, ऐसा कुछ आया था. 18 बाई 29. तो देयरफॉर वहां पे आर बार बाई 18, आई थिंक यू आर गेटिंग 8.314 बाई 18. कुछ ये आ रहा था सर, 0.462 ऐसा कुछ आ रहा था सर. सेम. एक सेकेंड. हेलो. यस. करेक्ट. करेक्ट. सेम वन, दिस वन. दिलसुख नगर. करेक्ट. करेक्ट. या. थैंक यू. या. श्योर. थैंक यू. ओके. ये करो.
सब लोग रेडी है रे, जिंदा है या नहीं है? मुश्किल है रे बाबा, बाबा मुश्किल है रे बाबा। Anyone 42? What is the slope of isothermal process for an ideal gas? For an ideal gas, PV is MRT. MRT. So isothermal temperature, mass is already constant, R is constant, isothermal temperature is constant, PV is equal to constant. And he is asking on PV diagram. So dy by dx, what will be the slope, sir? dP by dV. This is the slope. For which process is he asking? Isothermal. So differentiate karo. P into dV plus V into dP, and the differentiation of constant is 0. PdV is equal to minus VdP. ये भी पूछ सकता सर. This is a closed system work, this is a open system work. For which process the closed system work and open system works are same? ये isothermal for an ideal gas. ये भी पूछ सकता है सर. एक सेकंड. ये हेलो. Thank you. Okay, thank you. Okay. देखो, what is dP by dV? dP by dV minus P by V. Yes, true. Got it, sir? बहुत बढ़िया. कताली. You know, the Kelvin temperature is degrees Celsius plus 273.15. So the triple point is 0.01 plus 273.15. So this will be 273.16 Kelvin is the right answer. Correct, na, sirs? Correct, na, sirs? Good. So the triple point is 0.01 plus 273.15. Come on, do it. Bhajan Lal. भजन लाल. Worm and worm gears, actually, they are used for high velocity ratio. So C is matching to 1. ठीक है सर. Rack and pinion, आपको rotary is converted to sliding, तो rectilinear motion मिलेगा. So D is matching to 2. ठीक है सर जी. So D is matching to 2. Then helical gears किसके लिए आते हैं सर? See, the contact is extending along the point से धीरे से लाइन पे तक जाएगा, तो स्मूथ होगा. spur gears are very noisy, therefore ये स्मूथ होगा. Where is that? Smooth. So therefore A is matching to 3 and B क्या है सर? कहां गए रे वो? बेवल गियर्स, शाफ्ट इंटरसेक्ट. ठीक है. 3 4 1 2. इज डी करेक्ट? इज डी करेक्ट सर? बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही है. एक बात बताओ सर, एक सेकंड के लिए रोक रहा हूं मैं. क्या एग्जैक्टली बीएल के पैटर्न में चल रहा है या नहीं चल रहा है सर? आप बताओ, क्या एग्जैक्टली उस पैटर्न में चल रहा है? कोई भी नहीं बोल रहा तो मैं बंद कर दूंगा सर, दुकान को बंद कर दूंगा, दुकान को बंद कर दूंगा. आंसर दीजिए, आंसर दीजिए. मजा. आंसर बोलो. थोड़े क्वेश्चंस एक बार ट्रैप करवा देते हैं. एक सेकंड, मैं कुछ नहीं बोलूंगा. लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस क्या होता है थिन वर्ल्ड में? द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस इज
पीडी बाई 40 होता है सर। ठीक है, एक सेकेंड, दिस इज द इक्वेशन। प्रेशर कितना दिया सर? 2 एंड डायमीटर 25 एंड थिकनेस इज 2। पुट करके आंसर बताओ। सी, वेरी गुड। क्या स्टूडेंट्स है रे बाबा, क्लियरली बोला है थिन वॉल्ड पाइप कैरीज वाटर एंड डिस्चार्जेस, मतलब पाइप ओपन है और फ्लूइड फ्लो होके डिस्चार्ज कर रहा है सर। यहां पे यू विल गेट लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस ओनली व्हेन बोथ एंड्स आर क्लोज्ड। जब एंड्स क्लोज नहीं है तो कहां से रेजिस्टेंस आएगा सर? द फ्लूइड इज फ्लोइंग, यही तो है ट्रैप महाशय। इसको क्या बोलते हैं? ट्रैप महाशय। द फ्लूइड इज फ्लोइंग एंड डिस्चार्जिंग। वेयर डू यू, सरकमफरेंशियल तो आएगा ही आएगा, बिकॉज सिलेंडर के ऑल राउंड द फ्लूइड इज एक्सर्टिंग प्रेशर, सरकमफरेंशियल स्ट्रेस आएगा, लेकिन फ्लूइड आके निकल जा रहा है, द एंड्स आर नॉट क्लोज, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस? इट विल बी जीरो। देखो, थीजी 30, थीजी में 40, थीजी में 40। यूजलेस फेलोस, यूज करो। कहां गए रे वो? जीरो। अच्छा क्वेश्चन था सर ये। लेट अस नॉट वेस्ट टाइम। बहुत मजा आ रहा है, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। देखते हैं सर, हाउ मेनी ऑफ यू गिव आंसर टू दिस? प्लीज प्लीज, मैं एक हिंट दूंगा आपको। द हिंट इज द वेलोसिटी इज इन राइटवर्ड डायरेक्शन, द बॉडी इज मूविंग इन राइटवर्ड डायरेक्शन। Nobody knows me. Yes, but I know you. I know you. Nobody knows me. Nahi. I know you. Who are you? I know. देखिए सर, देखिए एक सेकंड. What is the displacement, sir? Where is given, sir? Somewhere it is given, I think. वर्क डन पर सेकंड, मतलब वो पावर पूछ रहा है. वर्क डन पर सेकंड इज पावर पूछ रहा है. I know who you are. It's a challenge if I tell you who you are. Don't underestimate me. आते जाते हुए सबकी नजर रखता हूं, नाम अब्दुल है मेरा, क्या सबकी खबर रखता हूं. हैं, चलिए देखते हैं. Look at, he is asking power. Power is force into velocity, and velocity is already 10, so you should multiply with 10. Where is that 10? 10 कहां गया रे? हाँ, 10 10 10 तो आएगा ही ना. हे भगवान, सुनो सर, बॉडी इज मूविंग लाइक दिस. क्या ये फोर्स सपोर्ट कर रहा है, अपोज कर रहा है सर? 200. हे भगवान बोलो, क्या ये फोर्स सपोर्ट करेगा, अपोज करेगा? द वेलोसिटी इज राइटवर्ड, सो दिस इज अपोजिंग, दैट्स वाई -200. देखो देखो, एक सेकेंड माइनस. और एक बात, when the body, देखो, relative friction opposes relative motion, तो ग्राउंड इज फिक्स्ड,
बॉडी ऐसा हो रहा है, द रिलेटिव मोशन इज इन दिस डायरेक्शन, सो फ्रिक्शन कैसा करेगा, अपोज रिलेटिव मोशन मींस इस डायरेक्शन में, तो फ्रिक्शनल फोर्स ऐसा आएगा सर, व्हाट विल बी द फ्रिक्शनल फोर्स, म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन, व्हाट इज द नॉर्मल रिएक्शन, इधर देखो, there is 100 units of force and its weight is also mg, its weight is also mg, correct, so reaction will be, देखो, normal reaction will be like this, so what will be the normal reaction, sir, there is no motion in this direction, so just equate these two forces, so it will be, normal reaction will be mg plus 100, excellent sirs. So what will be the frictional force, it will be mu into r, so mu into, what is r sir, r is mg plus 100, excellent sir. So there is mg plus 100 in this direction, 200 is in this direction, so therefore mu into mg plus 100 is in the leftward direction, plus 200 is also in the leftward direction, and force into velocity is this, but ये plus होगा minus होगा sir, because it is opposing, तो minus होगा sir, minus होगा, it is opposing, is it clear, C is the right answer, is it okay, नहीं आया आपको समझ में आया, अरे कुछ तो बोलो सर, पता नहीं यार आपके कुछ कमेंट्स ही नहीं आ रहे, इज इट क्लियर, अरे यार फ्रिक्शन फोर्स इज दिस, फ्रिक्शन फोर्स विल बी म्यू इनटू mg प्लस क्या बोलते हैं 100, देयर इज एक्स्ट्रा 100, दिस प्लस 200 into that velocity, power is force into velocity, but that is in the opposite direction, it's not supporting, okay, minus, okay, right, ये करो, very good, you can calculate, some information will be given, ये करो, anyone, such a simple question, you have to do it, what is the value of n in an adiabatic expansion, तो adiabatic के लिए क्या होगा सर, adiabatic means pv power gamma is constant, तो n क्या होगा सर, n will be equal to gamma, so can anyone tell under what conditions pv power gamma is equal to constant is applied, do you know conditions for applying this equation, समझ में आया सर, so he is asking adiabatic के लिए, adiabatic के लिए it should be, n should be gamma, the process must be reversible, the process must be adiabatic, and the working fluid should be an ideal gas, याद रख लेना सर ये, you cannot apply PV power gamma is equal to constant for any adiabatic, it should be applied only for reversible adiabatic, clear, very good, देखो सर, reversible adiabatic is isentropic, isentropic means entropy is constant, entropy is a property, can two same property lines intersect, can two same property lines, for example इधर देखो सर, suppose the pressure here is 2, the pressure here is 1, can same property lines intersect sir, इस लाइन पे प्रेशर अलग है, तो आइसेंट्रोपी, रिवर्सिबल एडियाबैटिक इज आइसेंट्रोपिक, क्या दो रिवर्सिबल एडियाबैटिक इज एंट्रोपी, तो ये एंट्रोपी लाइन, फॉर एग्जांपल लेट अस टेक T, let us take S, this is one entropy line, this is isentropic line, this is, can these two isentropic, that is reversible adiabatic, intersect, never, so two reversible adiabatics will never intersect, and
When I taught you thermodynamics, there also I taught you very clearly. When they intersect, it violates second law of thermodynamics. ये भी बताया था. किसी को याद है सर? ये भी बताया था. किसी को याद है? बहुत बढ़िया. बहुत बढ़िया रे. Come. Which one of the following is the correct for change in internal energy for an ideal gas? The internal energy change is given by CVDT and the enthalpy change is given by CPDT. So I think A is correct, na? Correct. करो ये. करो रे. करोगे याद तो हर बात याद आएगी. I'm in class, please. Okay? ठीक ठीक. बहुत मजा आया सर आज. कितने जबरदस्त स्टूडेंट्स हैं सर. कितने जबरदस्त स्टूडेंट्स हैं सर. In a reversible isothermal process, the fluid expands from 10 bar to and 2 meter cube. So he said isothermal process. Okay, the initial pressure is given as 10 bar and the initial volume is given as 2 meter cube. The final pressure is given as 2 bar and the final volume is given as 10. During the process, the heat is supplied at the rate of 100 kilowatt. बहुत बढ़िया से. Anyone have the answer for this? Hello? ఎవరండి? చెప్పండి. అవునండి. అస్సలు అవ్వలేదు. 10 సార్లు కంప్లైంట్ ఇచ్చిన కేస్ క్లోజ్డ్ అంటున్నారండి మీరు. అసలు ఫోన్ చేసినా ఎవరు ఎత్తుకోవట్లేరండి. వీఆర్ వెరీ సారీ అండ్ వీఆర్ ప్లానింగ్ టు మూవ్ ఇన్ అనదర్ డైరెక్షన్ అండి. ఎందుకంటే నాకు చాలా ప్రాబ్లం అవుతుంది. మీ వల్ల చాలా ప్రాబ్లం అవుతుంది. ఇమ్మీడియట్లీ అరేంజ్ చేయండి అండి. ఇమ్మీడియట్లీ. షూర్. ఓకే. నేను ఇప్పుడు క్లాస్లో ఉన్నానండి. లేదండి, నాకు ఎందుకు క్యాన్సలేషన్ పెడతాడు? నేను ఇప్పుడు క్లాస్లో ఉన్నాను. ఎప్పుడు నేను రిసీవ్ చేస్తానే. లేదండి, లేదు. ఆ టెక్నీషియన్ కి నేను నిన్న 6 సార్లు చేశానండి. నా కాల్ కూడా రిసీవ్ చేసుకోవట్లేడు ఆయన. ఇమ్మీడియట్లీ కాల్ చేయమనండి. ఓకే ఓకే. రైట్. సో నేను క్లాస్ చెప్పుకుంటూ మీరు మాట్లాడతానండి. ఓకే. సో దిస్ ఈస్ P1 V1 ఈస్ 20. P2 V2 is also 20. In which process for which working fluid do you think this is valid? You know, PV is MRT. This is constant isothermal. So P1 V1 is equal to P2 V2. Clearly the working fluid is an ideal gas. For an ideal gas, internal energy is a function of temperature. For isothermal process, as the temperature is constant, internal energy is constant. When internal energy is constant, the change in internal energy is zero. Very good. So I can write d dash q is equal to du plus d dash w. As the internal energy change is zero, whatever the heat is supplied, that will be converted into work. So as the heat supplied is 100, the work is also 100. He is asking work. How much is that? 100. Is it okay, sir? बोलिए. Okay, chalo. Come on, do it.
Got it? Got it? ఉన్నానండి. ఇప్పుడు కాల్ చేస్తారు? సరే. ఓకే. కట్ చేయనా కాల్ ఇప్పుడు ఇది? ఓకే. ఓకే. For turbulent flow, the boundary layer thickness is proportional to x power 0.8, or this can be written as case close అంటున్నారండి మీరు. Okay. So x power कहाँ गया रे? 4/5. If it is laminar, is it correct, sirs? For laminar, is it correct, sirs? Are say something. For which of the following dry bulb, wet bulb dpt are same? Whenever the air is saturated, when the relative humidity is 100%, 0% galat, 50% galat, when the air is 100%, it is saturated. देखो एक बार, omega dry bulb temperature. So at this state, this is dry bulb temperature. ठीक है सर? So ये wet bulb भी उतना ही होगा and the dew point भी उतना ही होगा. This is dew point, this is wet bulb and this is dry bulb. All will be same when the air is saturated, that is the relative humidity is 100%. Okay? ठीक है सर? फटाफट करो ये. सर टाइम वेस्ट नहीं करने का है. A building in a closed cold climate is to be heated by the heat pump. The minimum outside temperature is -23 and the building is to be kept at 27. Okay. What is the and the heat required is okay 330 minimum. Simple है सर ये. What is the minimum temperature, sir? 250. -23 is 250. Correct? Correct, no? Correct, no? Correct? And what is the maximum temperature? 27. So can I write this as 300? So how much is the heat supplied to the building? And the heat requirement is 30. So work ये पूछा है सर. ये तो Carnot है. Correct ना? So what is the COP of heat pump, sir? When it is Carnot, you can write in terms of temperatures. So it is heat pump. So T higher by T higher minus T lower. How much is the COP, sir? I can write COP in terms of temperatures only when it is Carnot. Okay. ये कितना आ रहा है सर ये? 50. Is it 6, sir? Is it 6? Correct. So COP is equal to desired effect. Now it is heat pump. The desired effect is 30 by work. So work is equal to 5. Anyone got this answer, sir? हे भगवान, गलत है या सही है सर? करेक्ट. करेक्ट. बाउंडलेस यूनिवर्स ब्रो. ओहो, क्या नाम क्या आ रहा है रे? Pulse jet engine, Lenoir cycle it uses. So Lenoir cycle is something like this. So it has a constant pressure process, constant volume process and isentropic process. So this is Lenoir cycle. It is used in pulse jet. याद रख लेना सर इसको. याद रख लेना सर.
ओके आंसर दीजिए, आंसर दीजिए, आंसर दीजिए, आंसर दीजिए, आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर डालकर आंसर दीजिए सर, क्वेश्चन नंबर डालकर आंसर दीजिए सर, क्वेश्चन डालकर आंसर दीजिए सर। यस, इट इज अ पिच सर्कल सर, इसमें कोई डाउट नहीं है। It is an imaginary circle where we can assume it to be under pure rolling as that of axial gear. Yes, it's circle, sir. Yes. Yeah, 56. We are nearing, sir. 56. We are nearing, sir. What does del V 0 mean? So dou U by dou X plus dou V by dou Y plus dou W by dou Z 0. ये किसके लिए होगा सर? इट इज वैलिड फॉर एनी इनकम्प्रेसिबल, ये गलतियां मत करना सर, इनकम्प्रेसिबल फ्लो इररेस्पेक्टिव ऑफ स्टेडीनेस, 1000 बार बोला सर ये, 1000 बार बोला सर ये, 1000 बार बोला। क्या हो रहा अब्दुल रहमान? अब्दुल रहमान तू गया रे, इधर देखो, इधर देखो, द जनरलाइज्ड कंटिन्यूटी इक्वेशन इज, जनरलाइज्ड कंटिन्यूटी इक्वेशन इज, दिस द वन, ठीक है। व्हेन आई से इनकॉम्प्रेसिबल, डेंसिटी इज कांस्टेंट, ये तो 0 है, तो इनकॉम्प्रेसिबल रो कॉमन लीजिए, रो लीजिए, डेंसिटी कांस्टेंट, अरे क्या हो रहा है, डब्ल्यू होता है यहाँ पे, तो क्या कर रहा हूं सर मैं पागल हो गया आपके साथ, पागल हो गया आपके साथ, ठीक है सर। रो कैन नॉट बी 0, दिस इज 0, सो व्हाइल ऑब्टेनिंग दिस, क्या बोले थे? I never said steady or unsteady. Simply I said incompressible. So please, if velocities are varying with time, it will be unsteady. If velocities are constant with time, if velocities are varying with time, it will be unsteady. If velocity remain constant, it will be for steady. So this is valid for any incompressible flow. क्या हो रहा सर आपको? बहुत बुरा हाल है सर आपका, ये बोलो। Oh God, today we have done very large number of questions. आज तो मजा ही आया सर। Power transmit, this is flow through pipes. This is flow through pipes. For maximum power transmission, the head loss is 1/3 of, this I'll be deriving. So anyway, I'm discussing fluid mechanics. When we go to flow through pipes, I'll be deriving. So B is the right answer, sir. I'll be deriving this. इसको करेंगे हम, ये वाला इसको करेंगे हम, ये वाला। A pipe is said to be, when can I say a pipe to be equivalent to something? Both pipes should have same discharge and the head loss should also be same. Then only I say it is equivalent. Length and discharge, no. Velocity and discharge, no. Discharge and head loss, yes. So therefore C is the right answer. बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। In a mild steel tested in tension on UTM, तो क्या क्या मिलेगा? Yes, I can find out modulus of elasticity. Yes, I can find out modulus of elasticity कैसा? Slope के साथ. Very good. Yes, yield stress can be found. Ultimate tensile strength, ultimate stress. Yes, this can be found. And ductility
You know the percentage elongation I can find. Can I find hardness UTM? No. Can I find modulus of rigidity on UTM? No. What is the answer, sir? What is the answer? बोलो रे, क्वेश्चन नंबर नहीं देते, कुछ नहीं देते, डीडी बोलते, मैं किसका ले लूं? ठीक है. Can I find modulus of rigidity from tensile test? Can I find hardness from tensile test? So for hardness, you have to go for Rockwell's hardness, Brinell's hardness. समझ गए? Oh my God, 60 questions. Really, आज तो we have done best. We have done very best. बहुत बेस्ट किए सर. ये करो, उल्टा आएंगे. कितने हैं सर? ये करो, उल्टा आएंगे. ये उल्टा क्यों आएंगे? ऐसे ही करेंगे. करो. So happy, sir. Experiments have shown that distortion energy gives accurate prediction about the failure of the ductile comment. Correct? Correct or not, sir? Because it gives me the exact shear stress. Correct or not? It gives exact value, distortion energy, exactly 0.577. Yes, it is correct. According to distortion theory, the yield stress in shear is less than in tension. Yes, the yield stress in shear is yield in tension by root 3. Correct ना? So yield is 0.57. ऐसा कुछ आ रहा है ना? So ये भी correct है sir. Yes. Is it correct? Yes. Is it correct? वाह, अंडरवर्ल्ड डॉन इज ग्रेट इस दुनिया में. डॉन इज ग्रेट इस दुनिया में. ये करो, हो गया सर. ये करो. मजा मजा. मजा मजा. नॉन फ्लो. नॉन फ्लो. करेक्ट. नॉन फ्लो मीन्स क्लोज्ड सिस्टम. कहां गए रे वो? For the same expansion ratio, what do you mean by same expansion ratio? Non-flow. Correct. Same expansion ratio मतलब final volume, initial volume should be same. तो क्या बोला है? Work done by gas diminishes as in value. देखो, in value increases. देखो एक बार. Same expansion ratio मतलब final volume. देखो, this is n is equal to 0. This is n is equal to infinity. So जैसे ही n का वैल्यू बढ़ रहा है, n is 1, n is 1.2, n is 1.3, n का वैल्यू बढ़ रहा है. What is happening to the area, sir? What is happening to the area? As n value is increasing, as n value is increasing, n का वैल्यू बढ़ रहा है, तो what is happening to the work, sir? Decreasing. देखो, n is 0 तो एरिया इतना रहा है, बिकॉज एक्सपेंशन रेशियो इससे बोला है. देखो आपको नहीं आ रहा है सर, इधर देखो. n value as n value is increasing, n का वैल्यू बढ़ रहा है, what is happening to the work, sir? Increasing. So n is 0 तो एरिया इतना रहा है, बिकॉज एक्सपेंशन रेशियो इससे बोला है. देखो नहीं आ रहा है. You tell me. बोलो.
क्या हो रहा है सर? कैन यू हियर मी? Can you hear me? As the n value is increasing, for this area is decreasing, work is decreasing. Very good. Huh. As diminishes, work diminishes. Yes, it is correct. Adiabatic mixing is irreversible. Oh my God. Adiabatic mixing is an irreversible. Mixing is always irreversible. So it is a reversible. Galat. So only one. Is it correct? What is the answer to this, sir? Anyone? 61st का आंसर दीजिए. 61st का आंसर दीजिए. चलो, बहुत अच्छा लगा सर. प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू. प्लीज. हेलो, समझ में आया सर सभी को? हे भगवंता. हेलो, कैन यू हियर? सो थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स. मस्त किए सर. अराउंड 61 क्वेश्चंस. सो आज का सेशन कैसा था? प्लीज क्लास के बाद आप कमेंट में लीव करना. यू लीव अ कमेंट कि क्लास कैसा था, आपको आगे क्या एक्सपेक्टेशंस है. ओके, चलो बाय बाय. ओके, बाय 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 बाय. थैंक यू थैंक यू थैंक यू. आई हैव नॉट वेस्टेड योर टाइम. थैंक यू. आई एम एंडिंग द सेशन. मैं सेशन को बंद कर रहा हूं. बाय बाय. प्लीज डोंट फॉरगेट टू लीव द कमेंट.